Good day, dear viewers. First things first, without declaring Pakistan a clear victor in its four-day conflict with India in May this year, noted defense and security expert Pravin Swahney has pointed out that Pakistan's profile as well as its military profile shot up after the Operation Sindoor. He has also pointed out that US President Donald Trump invited Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir to the White House, and Saudi Arabia cut a defense deal with Pakistan after the Operation Sindoor. According to Mr. Sawhney, after the 1971 war between India and Pakistan, India's military was widely considered a far superior military to Pakistan's. Unfortunately, India lost that reputation or status after the Operation Sindoor. Let's listen to him. तो मुझे बताइए प्रवीण जी, कौन जीता भारत और पाकिस्तान के बीच? ये जो छोटी मोटी जंग हुई या झड़प हुई या कोई भी आप नाम ले दीजिए इसको टेक्निकल, इसमें जीता कौन? देखिए, वो तो दुनिया ने फैसला किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोफाइल बढ़ गई है, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ गई है। उसी के अगर ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होता, और ये नहीं होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको लंच के लिए नहीं बुलाते। वो इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो है ये हमें समझाएं कि मिडिल ईस्ट में क्या होता है, ईरान क्या कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ने ये तय किया है कि पाकिस्तान ने इसमें अच्छा काम किया है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा जीता इनका या इन्होंने जंग जीती? क्या जीता, प्रोपेगेंडा या जंग? देखिए, जंग तो हुई ही नहीं है। जो 4 दिन का काम हुआ है, जंग 4 दिन में खत्म नहीं हो जाएगी। हिंदुस्तान, हाँ जी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वो एयर वॉर होती है, और वो इसलिए होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो है, हम दोनों नेबर्स हैं, यहाँ एयर का रोल बहुत बड़ा होगा। और जो एयर फोर्स होती है उसका जो मेन काम होता है वो होता है एयर सुपीरियॉरिटी। उसको हम बोलते हैं कि एयर टू एयर एंगेजमेंट। तो वो पहली ही 6-7 की रात को हमने देखा कि एयर टू एयर एंगेजमेंट पाकिस्तान एयरफोर्स ने करी, और अगले दिन उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस को बुला के ब्रीफिंग भी दी। हम तो अभी तक उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इस पर कोई बातचीत नहीं की। नहीं, हमारे किसी भी अफसर ने इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहते। हम खुल के, वो कुछ टिप्पणियां आती रहती हैं, जैसे सीडीएस ने सिंगापुर में बोल दिया हाँ हमारे कुछ रफाल गिरे थे। फिर वो एक और है हमारे नेवल एडवाइजर इंडोनेशिया में, उन्होंने बोल दिया कुछ जहाज गिरे थे। पर एयरफोर्स चीफ ने जब बात करी, हमारे एयरफोर्स चीफ ने, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में। फिर वो बहुत सारी किताबें आ गई हैं मार्केट में कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये किया। एयर वॉर की बात ही नहीं करते। देखिए, जहां तक दुनिया का ताल्लुक है और दुनिया में जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो एयर वॉर को अहमियत देते हैं, और दुनिया ये समझ रही है कि ये जंग पाकिस्तान जीत गया है। मतलब अगर तथ्यों को भी थोड़ा किनारे रखें तो कम से कम दुनिया को ये कन्विंस करने में पाकिस्तान कामयाब हुआ है। देखिए, पाकिस्तान ने 16 सितंबर को उनके जनरल खालिद हैं, जो एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनके होते थे, अब रिटायर हो गए हैं, अभी हैं वो एडवाइज़र नेशनल कमांड अथॉरिटी के, जो न्यूक्लियर वेपन्स में डील करती है। जनरल खालिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस्लामाबाद में 16 सितंबर को, और उसमें उन्होंने कहा कि 4 रफाल हमने गिराए हैं 6-7 की रात को, और रफाल के नंबर भी दे दिए। उन्होंने अपनी तरफ से एविडेंस दे दिया, पर हमने उसके ऊपर कोई बात नहीं करी। फिर उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो उन्होंने यूएन में बोला कि हमने 7 हवाई जहाज गिरा दिए हैं, और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हमें अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए, पर हम वो कह नहीं रहे। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि भारत में जो विदेश मामला, बताना चाहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच नॉट मेनी पीपल आर सेइंग, वो ये है, आफ्टर द 1971 वॉर दैट मिसेस गांधी फॉट एंड वी क्रिएटेड बांग्लादेश, सोच ये थी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की फौज से बहुत बेहतर है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटी में वी आर सुपीरियर। ऑपरेशन सिंदूर ने वो तोड़ दिया है।
जो एक सोच थी वो सोच टूट गई है इसमें, क्योंकि अगर वो जीते भी नहीं हैं तो ये दुनिया को पता चल गया है कि उन्होंने बराबरी से काम किया है, इसलिए उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है। ये बहुत सीधी सी बात है। Talking about the lessons that need to be learned from the Operation Sindoor for the next engagement between India and Pakistan. Mr. Swahney has again lamented that India's armed forces have conceded their operational and strategic space to the political leadership. According to Mr. Swahney, the next engagement between India and Pakistan will certainly take place, and it will be in the form or shape of a hot war. Therefore, it will be far more deadlier than the one in May this year. Backed by China and Turkey, Pakistan appears to be fully prepared and equipped to perform well in the all war domains in the next engagement. Its Air Force and the newly raised Rocket Force Command of Army will be playing the key roles in getting air superiority against India in the next engagement. Both India and Pakistan, according to Mr. Swahney, have identified their weaknesses and gaps in the Operation Sindoor. Insofar as Pakistan is concerned, it will overcome its weaknesses and fill gaps much faster than India. Let's listen to him again. The thing that strikes is that all the engagements between India and Pakistan under the Modi government, the military engagements, they have been bigger each time. 2019 was bigger than 2016, 2025 was bigger than 2019, so it is a certainty that the next engagement, when that happens, let's call it Sindhu 2, will be far bigger, will be far deadlier than what has happened in Operation Sindoor, and therefore it is important to understand the lessons of Operation Sindoor. First of all, I would like to say that Sindhu 2 will be a bigger war than what Sindoor 1 was. What we saw, the 4 days war, and in fact, Sindoor provides the perfect window into what the Sindoor 2 will be, and hence the need to focus on the lessons of Sindoor. And the battlefield is concerned, the battlefield certainly will be uh, India fighting with Pakistan, with PLA helping it to the hilt. So what we saw in Sindoor 1 or Operation Sindoor, one front integrated war, it will be enhanced at a very higher level. Because as far as China is concerned, China means it when it says that it will support Pakistan's territorial integrity and sovereignty. And they will do that. So what we will be looking at or should be prepared for as far as Operation Sindoor 2 is concerned is that on the Pakistan side, as far as the strategic level is concerned, that will be controlled by Field Marshal Asif Munir. And as far as the operational level is concerned, which is the key level, as I said, for a campaign winning or losing, it is the three service chiefs of Pakistan that will make the war plan, but it will be the Pakistan Air Force and the newly raised Pakistan Army Rocket Force Command, which will be there in the lead in an operational role for getting a superiority against India. Because only once that is got at some level that the tactics will start and the Pakistan Army then will be looking at exploiting the gaps in the land war. However, on the Indian side, I do not see a possibility of anything more than what we have seen in Sindoor 1, which means that both the strategic and the operational level of war will be controlled by the Prime Minister himself. The service chief will be left to tactics and narrative building. And let me say it very clearly that however good the tactics be,
without a sound grounding of the operational level of war, it will unravel very fast, unfortunately. Last but not the least, Mr. Pravin Swahney hasn't said anything about the likely response of Saudi Arabia, which is a major source of energy, workers' remittances, and investment for India, to the next engagement between India and Pakistan. I'm Sarfraz Ahmed, based in Karachi. I'm a student of Indology, Sovietology, Semitic languages, and Middle Eastern studies. أنا سرفراز من نائب رئيس التحرير في جريدة كراتشي باكستان. من يا جبوت سرفراز أحمد يا ربوتي بجدة كراتشي باكستان.